In today's lecture, we are going to talk about introduction regarding the turbo machines. In this course, like I said, that the first unit deal with turbines and pumps, and in turbines also we are going to study hydraulic turbines. So let me start with the hydraulic turbines. Just a basic definition, a turbo machine can be defined as a device in which energy transfer occurs between fluid in motion and a rotating shaft due to dynamic action that results in changes in pressure and fluid momentum. क्या बात कहना चाह रहे हैं कि टर्बो मशीन कोई भी ऐसी डिवाइस के बारे में बात हो रही है जहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और एनर्जी ट्रांसफर किस में हो रहा है? फ्लूइड है जो मोशन में है और शाफ्ट है जो रोटेट हो रही है, और ये एनर्जी ट्रांसफर प्रेशर चेंजेस और मोमेंटम की वजह से होता है। तो टर्बो मशीन की एक बेसिक डेफिनेशन ऐसे कही जा सकती है। फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, turbo machines have been around in the form of pedal type water wheels since 70 BC. They were used for grinding grains. So it's not something new. The turbo machines have been quite old. Even from BC, before Christ, we had turbo machine in some form or the other. Development of modern turbo machinery in the form of hydraulic turbines or hydraulic machines, it can be traced back to Leonhard Euler. Euler equation आपने पहले भी पढ़ी होगी, सुना होगा। आयलर जो हमने FM1 का कोर्स पढ़ा था उसमें भी आयलर इक्वेशन आई थी। तो आयलर साहब ने एक आयलर टर्बाइन इक्वेशन दी थी 1754 में। This equation, which was given by Euler in 1754, and it is still used. You would see its derivation and how it is used, and we would do that maybe in our next lecture. So Euler gave this equation, Euler turbine equation 1754, and it is still very much in use. The term turbine was coined in 1822 by Claude Bourdin. Claude Bourdin साहब ने पहली बार ये नाम जो है टर्बाइन वो दिया था। Now most of the machines designed during the 18th and 19th century were based on water wheels. Water wheel क्या है? ये जो आपने पहले मतलब बेसिक ये डायग्राम अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ऐसा कुछ आपने देखा भी हो सकता है कहीं पे, सिंपली एक व्हील है और एंड पे आपने उसके पेडल टाइप कुछ लगा रखे हैं, फ्लोइंग वाटर है इस तरीके से, और यहाँ पे ये इस बकेट से आके मोमेंटम ट्रांसफर होता है और फिर इसकी वजह से ये व्हील एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। दिस इज अ वाटर व्हील, ठीक है। So these were the ones which were mostly developed during 18th and 19th century. In 1824, Bernard Fournion, and he was this Claude Bourdin's student, he built a high efficiency hydraulic turbine, the first high efficiency hydraulic turbine. And his turbine achieved efficiency close to 85%. So just look at it, that even in 1824, that much back, okay, century back, 2 centuries back, there was a machine, hydraulic machine, which had a very good efficiency. 85% efficiency is quite good. That turbine was of radial outflow type. टर्बाइंस की डिफरेंट टाइप्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये पर्टिकुलर टर्बाइन जो फोर्नियन ने दिया था, ये रेडियल आउटफ्लो टाइप था। Poncelet conceptualized the first inward flow turbine in 1826 and Howe built the first one in 1838 and obtained patent for it. Okay. Hopefully ये पेटेंट के बारे में आप लोगों को मालूम भी होगा। जब भी कोई नया इन्वेंशन होता है, कोई नई चीज़ बनाई जाती है, और अब तो ये बहुत ज़्यादा होने लगा है कि आपने कोई डिज़ाइन दिया, दिस इज़ समथिंग गिवन बाय यू, यूनिक, ये कहीं कॉपी ना हो जाए, इसके लिए पेटेंट किए जाते हैं। जिस तरह बुक्स के केस में कॉपीराइट होता है, इसी तरह से कंसेप्ट है, कोई आइडिया है, कोई प्रोडक्ट है, उसके लिए पेटेंट्स होते हैं। पेटेंट्स भी अलग अलग होते हैं। इंडियन हर कंट्री के अपने पेटेंट लॉ है, कुछ ग्लोबल पेटेंट्स भी हैं। तो एनीवेज दैट्स व्हाट दिस पेटेंट मीन्स।
तो अभी तक में जो हमारी बात हुई उससे ये अंदाजा हुआ कि मोस्टली जो टरबाइन पहले बनी हैं वो रेडियल टाइप के थे शुरुआत में। ओके, रेडियल में भी इनवर्ड रेडियल, आउटवर्ड रेडियल, और फिर कुछ टरबाइंस थे जो एक्सियल थे। ये रेडियल और एक्सियल से क्या मतलब है, यहां बात हो रही है कि वाटर किस तरीके से इनलेट पे आता है और कैसे आउटलेट पे निकलता है ब्लेड्स के ऊपर में। इससे पता चलता है कि रेडियल फ्लो है या एक्सियल फ्लो है, इनवर्ड फ्लो रेडियल है या आउटवर्ड फ्लो रेडियल है। और जब आप लैब में देखेंगे तो यहाँ जब टरबाइन की लैब होगी वहां पे भी आपको हम इन टरबाइंस के बारे में बात करेंगे। तो एक क्लासिफिकेशन टरबाइंस का जो है वो डिपेंडिंग ऑन फ्लो है, रेडियल फ्लो टरबाइन है या एक्सियल फ्लो टरबाइन, और रेडियल के अंदर में भी इनवर्ड है या आउटवर्ड है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट अ बिट इन मोर डिटेल। James B. Francis, he worked extensively from 1849 onwards on inward flow turbines. Initial turbines given by James Francis had purely radial flow, which were subsequently modified to accommodate mixed flows. Thus, modern inward mixed flow turbines are called Francis turbine. ये फ्रांसिस टरबाइन इनवर्ड फ्लो रेडियल टरबाइन है, मिक्स्ड फ्लो कहा जाएगा, यानी कंप्लीटली रेडियल नहीं है, मिक्स्ड है, रेडियल है, कुछ एक्सियल का कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है। और इसकी लैब आप इस सेमेस्टर में करेंगे, एक लैब फ्रांसिस टरबाइन के ऊपर होगी। होपफुली योर 6th lab would be on Francis turbine. They are highly efficient and are commonly used in hydroelectric power generation. This Francis turbine, they are highly efficient and they are used in power generation. ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में टरबाइन के। एक क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया डिपेंडिंग ऑन फ्लो है, रेडियल फ्लो वर्सेस एक्सियल फ्लो। एक और क्लासिफिकेशन होता है टरबाइन का, दिस वाज लेट्स से द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दिस इज द सेकंड क्लासिफिकेशन, रिएक्शन टरबाइन वर्सेस इम्पल्स टरबाइन। इन टर्म्स को जिनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में आगे चल के हम बात करेंगे। So now let's talk about the second type of reaction turbine, and this was conceived by a Czech professor Victor Kaplan. He obtained his first patent in 1912. It was axial flow type. His initial designs were not successful due to cavitation. ये cavitation क्या चीज होती है इसके बारे में भी जरा सा आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अगर अभी हम बताना चाहें, in short, if I want to define cavitation, then I would say that when a turbine is moving, then at certain speeds the local vapor pressure it reduces, the local pressure reduces and it becomes less than the vapor pressure at that particular point, and due to this phenomena vapor bubbles are created which then move towards the blade, solid blade material, and these bubbles they collapse. Now due to this action of collapsing of the bubbles, strong pressure spikes occur and that erodes the material away from the turbine blades, and this is known as cavitation. इसको हम आगे जाके क्या होता है, इसके बारे में कैसे होता है, किन कंडीशंस में कैविटेशन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके और बात करेंगे। तो एनीवेज व्हाट इज बीइंग सेड हियर इज दैट इनिशियल जो डिजाइन थे उनमें कैविटेशन था, ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते। सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशंस वर मेड एंड दिस वाज डन टू मेक द टर्बाइन सुटेबल फॉर लो हेड एप्लीकेशन सच एज रिवर्स। यहाँ हेड की बात हो रही है, लो हेड, हाई हेड। हेड इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो, है ना, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट वेयर आई एम इंटरेस्टेड इन द प्रेशर एंड द वाटर लेवल इज लेट्स से एट एच हाइट अप, देन दिस इज नोन एज हेड। एच हेड है हमारा इस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो ये कह रहे हैं कि
कैप्लान टरबाइन जो यूज होता है, एक्सियल टरबाइन जो यूज होता है, वो लो हेड सिचुएशन में यूज होता है, जैसे कि रिवर्स. नाउ टुडे all adjustable pitch propeller turbine are named after him. By that I mean that they are known as Kaplan turbine. कैप्लान टरबाइन कुछ नहीं, जिस तरीके से आप ऐसे समझिए कि आपके पास में एक शैफ्ट है और एक हब है और उस पे ब्लेड्स लगे हुए हैं. जैसे प्रोपेलर होता है बिल्कुल वही, तो प्रोपेलर टरबाइन भी कहा जाता है. प्रोपेलर टरबाइन और कैप्लान टरबाइन बस इतना सा फर्क है कि अगर ये पिच आप चेंज कर सकें, यानी वो एंगल जिस एंगल पे हब से ब्लेड लगे हुए हैं, अगर आप वो एंगल चेंज कर सकें तो ये कैप्लान टरबाइन हो गया, एडजस्टेबल पिच. और अगर वो फिक्स्ड है तो मतलब प्रोपेलर टरबाइन है. प्रोपेलर टरबाइन भी हमारे यहाँ पे हमारी लैब में है, एंड इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे लुक एट इट्स फंक्शनिंग ऑल्सो. देखते हैं अगर टाइम मिला तो उसकी भी वीडियो अपलोड करेंगे एंड यू कैन लुक एट इट. सो दैट वाज द सेकंड टाइप. जो फर्स्ट और सेकंड टाइप हमने आपको टरबाइंस की अभी तक बताई, दोनों में एक चीज कॉमन है, दे बोथ आर रिएक्शन टरबाइंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, एंड दिस वन is an impulse turbine. The third type of hydraulic turbine is the Pelted turbine. It is an impulse turbine as opposite to a reaction turbine. जो first two थी वो reaction turbine थी और ये impulse turbine. क्या होता है? It works on the principle of high velocity jets. आपके पास में इस तरीके से वेन है, बकेट है, water comes at high velocity, it strikes and then it moves away. Due to this, some momentum exchange happens, and due to this momentum exchange, the turbine starts to move. It works on the principle of high velocity jets impinging on a set of blades. The entire energy conversion takes place before the water enters the runner. There is no pressure drop in Pelted turbine. इससे पहले जो हमने रिएक्शन टरबाइंस के बारे में बात की 1 और 2 में, वहां पे प्रेशर ड्रॉप होता है इनलेट और आउटलेट पे. अगर देखें तो वाटर इनलेट पे जिस प्रेशर पे आता है और आउटलेट पे जिस प्रेशर पे होता है उसमें चेंज होता है. लेकिन अगर हम पेल्टन टरबाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ यही बात कह रहे हैं, देयर इज नो प्रेशर ड्रॉप इन पेल्टन टरबाइन. Now moving forward a little bit regarding the pumps. Earliest pump concepts can be traced back to Egyptians around 2000 BC, and around 200 BC the Archimedes screw pump was devised to lift liquid and slurry. और ये screw pump अब भी किसी न किसी फॉर्म में यूज होता है. Compressible flow machines are more recent. अभी तक में जो हमने आपसे जिन टरबाइन के बारे में या कुछ पंप्स, बेसिक पंप्स के बारे में जो घरों में भी यूज होते हैं, लेट्स से इधर यू कॉल इट मल्टी स्टेज सबमर्सिबल पंप्स, दे आर बेस्ड ऑन रोटोडायनामिक पंप्स. You know, most of them, they are incompressible, they deal with incompressible flow. And recently, by recently I mean few decades back, we have started to look into compressible flow machine. The earliest modern steam turbine was made by Taqi al-Din in 1551, and almost a century later similar devices were made by John Wilkins and Branca in 1629 and 1648. In 1831, William Avery built the first useful steam turbine and obtained patent for it. Maybe some of you may have heard this name, Avery engine. It's a quite well-known name. Now, as opposed to gas and steam turbines, hydraulic turbines exhibit higher efficiency to the range of 94%. यानी already hydraulic turbines की efficiency बहुत ज़्यादा होती है. Their fuel is water, which is free of cost. Now, this has resulted in almost no interest in research in hydraulic turbine. Same is the case for pumps.
हाइड्रोलिक टर्बाइंस में या जो हम बेसिक पंप्स की बात कर रहे हैं ऑलरेडी वो काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी पे काम करते हैं, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च इनमें नहीं हो रहा है। इस टर्बो मशीन की फील्ड में अगर मैं बात कहूँ तो मेजर रिसर्च इंटरेस्ट इन दीज टू टाइप ऑफ मशीन्स इज इन मेकिंग द रनर मटेरियल मोर कैविटेशन रेजिस्टेंट। यहाँ पे मटेरियल्स में काम हो रहा है। इन टर्बाइंस की बात करूँ कि भाई कैविटेशन का फर्क ना हो, कैविटेशन की वजह से ब्लेड खराब ना हो, तो उन पे तो कुछ काम हो रहा है। अदरवाइज ये इनकम्प्रेसिबल टर्बो मशीन्स में कोई बहुत ज़्यादा काम एज सच नहीं हो रहा है, या दूसरा कुछ काम ऐसे हो रहा है कि इन हाइड्रोलिक मशीन्स को जो है वो एक्वेटिक लाइफ फ्रेंडली बना दिया जाए, यानी कि फिशेस को नुकसान ना पहुंचाएं, ऐसा कुछ किया जाए। However, in gas turbine work is going on. हाँ, अगर हम टर्बो मशीन्स की बात करें तो वहाँ पे गैस टर्बाइंस हैं जहाँ पे, यानी कंप्रेसिबल फ्लो जहाँ पे हो रहा है, हाँ उन पे काफ़ी हद तक फ्लूइड मैकेनिक्स के एरिया में अगर कहा जाए तो अभी भी काफ़ी कुछ काम हो रहा है। So this brings our introduction to turbo machine to an end, and in next lecture we would start discussing Euler equation.